Good morning, kids. Congratulations on completing the story on Dr. Bhimrao Ambedkar, also known as Baba Sahib, the person who is a hero for many people, who was an idol for many people, one person who changed lives of millions of people due to his good education and his will to fight for the right thing. Okay, so Bacha, you remember the last question from the last video where I asked you that if you were in time of Baba Sahib, what rules and regulations would you have wanted him to set for our country? And I got some very beautiful answers from each one of you. It was so nice to see all of you writing so good things that even if people are poor, they should be respected. Everybody should have right to education. There should be no discrimination. So many beautiful things I read in your notebooks, and I would really like to appreciate the effort and hard work and thinking you put into writing those thoughts. Very beautiful. And today I'll be finally telling you what actually are our rights as an Indian citizen. एज एन इंडियन सिटीजन हमारे पास क्या क्या हक हैं इस कंट्री में रहने के साथ साथ वो मैं आज आपको फाइनली बताऊंगी. सो बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर एंड you'll be jotting down, you'll be writing down. Jot down करना मतलब लिखना. You'll be writing down all the rights and all the rights that I'll be telling you that we as a human have in this country. We all are born free, मतलब हम सब आजाद पैदा होते हैं. ठीक है. ह्यूमन राइट्स मतलब एक ह्यूमन होने के नाते हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं. आर वी रेडी? लेट्स मूव अहेड. ओके. We all are born free. We all have our own thoughts and ideas. We should all be treated in the same way. These rights belong to everybody, whatever our differences. Basically, it means that all of us are equal. किसी में कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए. हम सब आज़ाद है, हमारे अपने सोच है, हम सबको बराबरी से ट्रीट किया जाना चाहिए. We shouldn't be treated in different ways for being a girl or a boy, for being rich or poor, for being of different religion. हम सब बराबर हैं. We have equality. We all have a right to life and to live in freedom and safety. फ्रीडम एंड सेफ्टी मतलब आज़ादी में रहने की हमारे पास राइट है और सेफ रहने का हमारे पास हक है. कोई हमको आके डरा धमका नहीं सकता है. ओके. वी ऑल कैन आस्क फॉर द लॉ टू हेल्प अस व्हेन वी आर नॉट ट्रीटेड फेयरली. जब भी कोई हमारे राइट्स ब्रेक करता है, हमको फेयरली ट्रीट नहीं करता है, all of us can ask the law. We can go to the law, the lawyers, Supreme Court, High Court. We can go to them and we can complain and we can tell them that we are not being treated equally. हमारे साथ भेदभाव हो रहा है. Okay, so basically here you see in the picture, the mouse is complaining. Mouse has come to this man, to this duck, I think, whatever it is, complain करते हुए कि बिल्ली उसे परेशान कर रही है. So basically, the cat went to the mouse, is what I'm understanding, because the cat has a cookbook. So the cat went to the mouse उसको मारने के लिए ताकि वो उसका खाना बना सके. And mouse realized, oh, कोई मुझे threaten कर रहा है, कोई मुझे डरा रहा है, मुझे बराबरी से treat नहीं कर रहा है. Let me go to the court and complain. So basically, we also have the right to go to the court and complain. Nobody has the right to put us in prison without a good reason, to keep us there or to send us away from our country. So basically, कोई हमें कैद नहीं कर सकता बिना किसी रीजन के. So अगर माउस जाके कैट की झूठी कंप्लेन करता है, so the court cannot arrest the cat किसी झूठे कंप्लेन के बेसिस पे. Okay, they need to have a proof. Nobody can send us away from this country. Nobody can tell you कि you don't belong to this country, go away. You have the right to live in this country. We all have the right to believe in whatever we like, to have a religion and to change it if we wish. So now, bacha, this is one right that many of the people in this country don't know. We have the right to believe in whatever we like. कोई हमें नहीं बता सकता कि यही सही है या यही गलत है. इवन मैं आपको नहीं बता सकती. मैं आपकी टीचर हूँ, पर मैं भी आपको नहीं बता सकती ये सही है ये गलत है. आप जिस चीज को सही मानते हैं आपको उसमें यकीन करने का हक है.
to have a religion and to change it if we wish. This is very important, which many people don't know. हमारे पास हक है कोई भी रिलीजन रखने का और चाहे तो उस रिलीजन को बदलने का. अगर आप एक हिंदू घर में पैदा हुए हैं, आप बड़े होके दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं. अगर आप एक मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं, आप बड़े होके क्रिश्चियन में बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं. ऑल्सो अगर आप किसी भी रिलीजन में नहीं रहना चाहते, आपके पास उसका भी राइट है. You have the right to belong to any religion or no religion as per your wish. आपकी अपनी इच्छा है, आपको कोई धर्म का पालन करना है या नहीं करना है, बट कीपिंग इन माइंड दैट यू आर नॉट कॉजिंग ट्रबल टू अदर्स, दूसरे को परेशानी ना करते हुए. ओके, we all have the right to meet our friends and to work together in peace to defend our rights. Nobody can make us join a group if we don't want to. So all of us basically have a right to choose which group we want to be a part of, and if we have right to work together in peace, मतलब शांति से साथ में काम करने का, to defend our rights. कोई हमारे rights को violate कर रहा है, violate means उन्हें पालन ना करते हुए हमारे rights बिगाड़ रहा है, हमारे पास हक है हम peacefully उनके खिलाफ लड़ें. ओके, कोई हमें जबरदस्ती घसीट के कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन करा सकता. मैं आप लोग को जबरदस्ती नहीं बोल सकती कि आपको ये आपको जो सैटरडे को डांस क्लास है वहां पे जबरदस्ती आना है. आई कांट डू इट टू यू. इट इज योर राइट टू चूज विच ग्रुप यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. Nobody has any right to hurt us or to torture us. कोई हमें दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई हमें मार नहीं सकता है. Nobody can torture us. Be it your teacher, your parent, your brothers, your friends, anybody. कोई आपको torture नहीं कर सकता. If they torture you, you can always go to the court to complain. If we are frightened of being badly treated in our own country, we all have the right to run away to another country to be safe. Like I said, कोई आपको जबरदस्ती इस कंट्री से नहीं निकाल सकता. सिमिलरली कोई आपको जबरदस्ती इस कंट्री में नहीं रख सकता. अगर आपको लग रहा है आप इस कंट्री में सेफ नहीं फील कर रहे हैं, तो आप ये कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा सकते हैं. लाइक यू सी द बॉय इज फ्लाइंग अवे टू अनदर कंट्री और उसके पैर में दिख रहा है जंजीर टूट चुकी है. बेसिकली कोई कैद नहीं कर सकता हमें. हम जहां चाहें सेफ फील करें, हम वहां जा सकते हैं. We all have the right to make up our own minds, to think what we like, to say what we think, and to share our ideas with other people. हम सबके पास हक है जो भी हम सोचते हैं वो बोलने का और दूसरों के साथ शेयर करने का. So this is a classroom where everybody has different thoughts. Can you see? Everybody is sharing different thoughts. सबके दिमाग में अलग अलग बात चल रही है. And some people are sharing. So nobody can tell you कि नहीं तुम मत बोलो यहाँ पे, तुम अपने thoughts नहीं share कर सकते, तुम चुप रहो, तुम मत सोचो. Nobody can tell you this. Why? Because it is your right. We all have the right to a good life. Mothers and children and people who are old, unemployed or disabled have the right to be cared for. So simple, बहुत बेसिक सी चीज, हम सबको हक है एक अच्छी जिंदगी जीने का. We all have the right to take part in the government of a country. Every grown-up should be allowed to choose their own leaders. So basically now we are talking about democracy. So in class 6C where I taught SST, I also taught you about democracy if you remember. मतलब जहाँ पे हम we ourselves choose who will govern us. हम अपनी गवर्नमेंट खुद से चूज कर सकते हैं, वो हमारा हक है. हम कैसे चूज करते हैं अपनी सरकार? वोट करके. करेक्ट. व्हेन वी आर 18 प्लस वी वोट फॉर द पीपल हु गवर्न अस. तो हमारा हक है. कोई तुमसे ये नहीं बोल सकता कि तुम लड़की हो तो तुम वोट नहीं कर सकते, तुम इस कास्ट के हो तो तुम वोट नहीं कर सकते. हर एक जना whoever is 18 years plus can vote for a government and choose their own leader. Now quickly make a list of all the rights that you understood. Okay? पीछे करिए, हर एक फोटो में एक राइट लिखा है, उसको लिखिए. Don't write it in the same language, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं आप. Okay? Okay. Now we'll quickly, I already told you about the caste system, we'll quickly go through it once more. Okay?
So caste system, I already told you, is like a ladder. In this ladder, if you see, there is human 1 at the lowest step and human 5 at the topmost step. और सबसे ऊपर ladder में आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? Goal. Okay. Now quickly, these are few questions. I want all of you to quickly write answers to these questions. I'm reading these questions और जल्दी से आपको लिखना. Okay. How many steps do we have on this ladder? 1, 2, 3, 4, 5 steps. Correct. Who is at the lowest step of the ladder? Who is at the lowest step? Human 1. Who is at the highest step of the ladder? Human 5. Bacha, also make this ladder, okay? While you are writing it, also make this ladder. Where is the goal? Where is the goal? At the top of the ladder. Who is the closest to the goal? Which human? Human 5. Who is the farthest from the goal? सबसे दूर कौन है goal के? Human 1. If you had to be one of these humans, who would you choose to be and why? अगर आपसे बोले आप इनमें से एक इंसान बन सकते हैं, आप कौन सा इंसान बनेंगे और क्यों? If society decides that you can only be human 1, how would that make you feel and why? अभी सपोज आपका कोई और ह्यूमन बनने का मन है. देखिए, at the top of the ladder there is our goal. गोल मतलब जो भी हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, और गोल के सबसे नजदीक कौन है? ह्यूमन 5. तो I'm assuming most of us would want to become human 5. पर सोसाइटी, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, वो हमसे बोलते नहीं, यू कैन जस्ट बी ह्यूमन 1. तुम्हारे पास कोई आज़ादी नहीं है, तुम सिर्फ ह्यूमन 1 बनोगे. हाउ वुड यू फील एंड व्हाई? Okay. Now keep all these things in mind and let's see that who these humans are. So this ladder is an actual ladder और कास्ट सिस्टम ऐसे डिवाइडेड है कि जो ह्यूमन 1 है, जो अपने गोल से और लाइफ के प्लेजर से सबसे दूर है, दोज आर अनटचेबल्स. ह्यूमन 2 आर शूद्र, ह्यूमन 3 वैश्यास, ह्यूमन 4 क्षत्रियास, ह्यूमन 5 who are nearest to their goals are Brahmins. This is the caste system. Each caste is at a different step of the ladder. Brahmins are at the top of the ladder, untouchables are at the bottom of the ladder. Okay, so this is what caste system looks like. And very sadly, but it is still followed in many parts of our country. Now, goal has been replaced with best education, good job and respect. So बच्चे, these are few things जो हम सबका हक है और हम सब चाहते हैं अपनी जिंदगी में. Correct? We all want good education. We all want a good job when we grow up. All of us want respect. But these things, now, if the goal is education, it is more difficult for untouchable children to study than it is for Brahmin children. Why? Because as we see in the ladder, untouchable kids are at the lowest level. Okay, like it was very difficult for Bhimrao Ambedkar ji to study. Similarly, if the goal is a good well-paying job, it is more difficult for untouchables to get a good well-paying job than it is for Brahmins. Similarly, कोई सा भी हमारा goal है, it gets more difficult for the people at the lower side of the ladder to reach that goal. Now, one good news is that in India, there have been made some rules and regulations after which even the people at the lower part of the ladder are getting good job, good education and respect. अभी काफी जगहों में भेदभाव नहीं होता, in many places. Okay, even in our school we don't say कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम यहाँ पे बैठोगे, तुम शूद्र हो तो तुम वहाँ पे बैठोगे, right? So even in our school there is no discrimination. So in most of our country there is no discrimination, thanks to Baba Sahib and many people who made good rules and regulations for our country. But the really sad part is that in some backward places, in some villages, there are still struggles and problems, similar problems as they were many years ago. Okay, so this is basically again the ladder where they are telling who is at the top and then who, then who, then who. Okay. Okay, now one question I want you to think very carefully. You have to go back to the rights and rules that we read at the start of this video. The question is, which all rights in this caste is this caste system breaking? मतलब जो भी हमने rights पढ़े थे caste system की वजह से कौन कौन से rights violate हो रहे हैं, मतलब लोगों के कौन कौन से हक खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं.
Okay, pause the video, write your answers. Okay. Okay, Bacha, you remember in the last video I asked you the things that you learned from the story of Papa Sahib. So here I thought I should also think what I learned from this story, and I have made 4 points. Okay. First, what I learned is realize that bad is happening to you. So to fight anything, to stand for anything, the basic thing is to realize that something bad is happening. हमको नॉर्मल नहीं लगनी चाहिए चीज़, अगर कुछ गलत हो रहा है हमें वो गलत लगना चाहिए. Second is always question the wrong because it gives courage to others too, and then we can bring a change. हमें कभी किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि यार वो बोलेगा तो मैं बोलता हूँ वरना मैं नहीं बोलता हूँ. जब भी आपको कुछ गलत लगे आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी आपको देख के हिम्मत मिलती है. जैसे जब बाबा साहेब हिम्मत करके बोले, so everybody stood with him, right? We can bring a change without being violent. You don't have to create, you don't have to fight and hit anybody and give trouble to others to bring a change. आप peacefully भी एक change ला सकते हैं. Education is a strong tool. One educated person can change the life of millions like Dr. Bhimrao Ambedkar did. बेसिकली बच्चा आप सोचिए, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतनी पढ़ाई नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते, तो शायद वो इतना बदलाव नहीं ला पाते. एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है. अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे आप एक्चुअली मिलियंस एंड करोड्स ऑफ पीपल का लाइफ चेंज कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट भौमी दीदी अंडरस्टूड फ्रॉम द स्टोरी. Okay, last part for today's video is you have to find similarities between two people. One you can see is Dr. Bhimrao Ambedkar ji, and can you guess who could this first child be? Hmm? Let's take 5 seconds to guess. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so this child is the boy from the Emperor's New Cloth. जिस बच्चे ने, when everybody was like एक्सेप्टिंग, राजा सब उनको उल्लू बनाए थे और वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हाँ राजा ने कपड़े पहने, पर ये बच्चा सबके सामने सच बोला कि नो, द किंग इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग, द किंग इज इन हिज अंडरवेयर. सो बेसिकली व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू पीपल? द सिमिलैरिटी इज बोथ ऑफ देम आस्क्ड व्हाई. इन्होंने सवाल उठाया, जो लोगों ने कहा इन्होंने उन बात में यकीन नहीं किया. दे आस्क्ड क्वेश्चंस, दे आस्क्ड व्हाई, कि क्यों गलत बता रहे हो, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? So basically one important thing which we understand from both these people is there is no age to be a hero. You can be a hero even now. जो बच्चा छोटी उम्र में हीरो बन गया सच बोल के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी उम्र में बने, इट टेल्स अस कि कोई उम्र नहीं है हीरो बनने की, आप जब चाहें तब हीरो बन सकते हैं. सो नाउ क्विकली द लास्ट टास्क फॉर यू इज you have to look around, find one thing that you don't find okay, that you think is an evil to this society. मतलब आपको एक ऐसी चीज ढूंढनी है जो इस सोसाइटी में सही नहीं हो रही है, आपको लगता है ये गलत हो रहा है, भले ही सब कर रहे हैं या कम लोग कर रहे हैं पर ये गलत हो रहा है. It doesn't have to be your personal problem, it could be any problem you see around. अभी व्हेन आई से दिस, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ ही गलत हो रहा है या वो आपके परिवार में ही गलत हो रहा है, किसी और के साथ भी गलत हो सकता है, आपके फ्रेंड के साथ या किसी ऐसे के साथ जिसको आप जानते भी नहीं है. आपको बस एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढनी है जो आपको सही नहीं लगती है कि ये गलत होता है. ओके, एंड देन यू राइट दैट प्रॉब्लम डाउन, एंड below that problem you have to think and write what can you do to fight this evil. जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ कुछ किया, उस बच्चे ने सबके सामने सच बोला, सवाल उठाए, आप क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए? इट्स टाइम टू बी हीरो. वी कैन बी हीरो, लेट्स ट्राई टू बी हीरो इन आवर ओन लिटिल वेज. मैं ये नहीं बोली आप जाके कुछ बहुत बड़ा करिए, पर सोचिए कि आप छोटे से लेवल पे भी कुछ कर सकते हैं, कि आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं. इतनी छोटी सी चीज, आप कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है कि आप इस ये जो प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको ढूंढनी है, वो प्रॉब्लम वो क्या हो सकती है और आप उससे कैसे लड़ सकते हैं. ओके, एंड मे बी यू आर द नेक्स्ट हीरो वी नीड. रिमेंबर किड्स, वी लिव इन क्रांति नगर. क्रांति मीन्स रेवोल्यूशन, जो लोग गलत के खिलाफ खड़े होकर एक बदलाव लाते हैं, क्रांतिकारी बोला जाता है उन्हें. एंड वी लिव इन क्रांति नगर, एंड मे बी यू आर द नेक्स्ट हीरो वी नीड. Okay, so this is where our chapter ends. I hope you really like the story. I'll wait for all the answers on WhatsApp.
to be very honest, I've really loved checking all the answers for this story because all of you have given me such good and deep answers. I want you to take time, आराम से time लीजिए, आराम से सोचिए और फिर मुझे answers WhatsApp करिए. These are some problems that I wrote that we see around that I figured out. Okay.